Now, after being cornered, the Congress has tried to rally around Sam Pitroda. Watch how Priyanka Gandhi is trying to dismiss it as a useless issue, while others go on to say that his intention was not to divide. Listen into those reactions now coming in from the Congress. प्रधानमंत्री जो फुल टॉस पे खेलते हैं ना, तो इन्हीं फिजूल की बातों पे फुल टॉस खेलते हैं। मैं उनको चैलेंज करती हूँ, आप फुल टॉस खेलिए रोजगार पे, फुल टॉस खेलिए महंगाई पे, फुल टॉस खेलिए महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहा है और जो अत्याचार कर रहे हैं उनको बचा रहे हैं, उस पे खेलिए। फिर मैं मानूंगी कि हाँ कोई खेला है। इंसान इंसान है तो इंसानियत के रूप में पहचानने की जरूरत है। अब नाक से, कपड़े से, ड्रेस से पहचानने की जरूरत नहीं है। श्याम पित्रोदा ने अब किस संदर्भ में कहा है, एक तो देखना होगा किस संदर्भ में कहा है, किस परिस्थिति में कहा है, किस विश्लेषण में कहा है। वो बिना जाने जो है उसका अर्थ लगाने लेना भी उचित नहीं होगा। No, it is not a divisive. I don't think that it is a divisive comment because he speaks about the land where the people live. He doesn't speak about community, caste, or like the BJP's religion. Such things he is not speaking. He doesn't say that Hindus are like this, Christians are like that. He defines the land. And every land will have, the people living in every land will have different features, that apart. But that is not a necessary comment now. But ultimately what he has said, in spite of these different facial differences, we are all together. But even then, that comment is unwarranted now. That's all. See, the party has already dissociated his statement and has said that we differ and totally disagree with the analogies drawn by Mr. Pitroda. Although I believe that he was trying to illustrate the diversity of this country. But the intention was that we are a diverse country. He was building out a case for unity in diversity. So, that's why the party has dissociated, completely dissociated from his statement. Disagreed. We disagree. But the question is, no, I don't think that he has tried to that way make it a racist comment. Now, fuming over the remarks of Congress leader Sam Pitroda, the Saffron Party has slammed Rahul Gandhi's Bharat Jodo and Mohabbat Ki Dukaan pitch. BJP slammed the racist, divisive remarks of Rahul's mentor, stating that this exposes their mindset. This reveals that the Congress Party is inherently today focused on dividing India, dividing Indians on caste, on creed, on identity, on geography. And the Congress Party, simply by saying we distance ourselves. How do you distance yourself from a man who says terrorism happens? How do you distance yourself from a man that says corruption is a way of life? How do you distance yourself from a man that says the 1984 genocide happened, so what? How do you distance yourself from a man that displays this kind of deep-rooted racism against Indians? You cannot distance yourself. You have to either remove him from that position and officially say that the Congress apologizes for what a senior leader has said. ये शब्द अंकल सैम के हैं, पर ये सोच राहुल की है। अंकल सैम अब भारत बनाम भारत, भारतीय बनाम भारतीय कर रहे हैं और रेसिस्ट कमेंट भारतीयों पर कर रहे हैं। कहते हैं भारतीय चाइनीज दिखते हैं, भारतीय अफ्रीकन दिखते हैं, भारतीय ऐसे दिखते हैं, भारतीय वैसे दिखते हैं। मतलब राहुल गांधी के मेंटोर राहुल गांधी की तरह वो बांटते हैं जाति में, अगड़े पिछड़े में, वो बांटते हैं धर्म पे, वो बांटते हैं भाषा पे, और इनके मेंटोर जो है वो तो नस्ल पर ही बांटने लग गए, वो तो स्किन के कलर पर बांटने लग गए। ये भारत की डाइवर्सिटी का मखौल उड़ा रहे हैं, ये भारत की विभिन्नता का मखौल उड़ा रहे हैं। सैम पिट्रोडा राहुल गांधी के गुरु हैं और कभी वो गालियां देते हैं, कभी दक्षिण भारत उत्तर भारत में बांटते हैं। ये भारत का अपमान है। अगर ऐसी बातें वो की है तो राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को देश से माफी मांगना चाहिए। However, the Congress Party's own allies are also finding it tough to defend Sam Pitroda. Watch how they slam him for his divisive bid.
और प्रधानमंत्री ने उनको संसद के उद्घाटन में क्यों नहीं बुलाया? प्रधानमंत्री ने भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी को प्रभु श्री राम के मंदिर के शिलान्यास में नहीं बुलाया। प्रधानमंत्री ने श्रीमती द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति को मंदिर के उद्घाटन में नहीं बुलाया। ये लोग भेदभाव रखने वाले लोग हैं, दुर्भावना रखने वाले लोग हैं, दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों से घृणा करते हैं भारत के प्रधानमंत्री, उनकी पार्टी और आरएसएस। जहां तक सैम पेत्रोदा के बयान का सवाल है, उस तरह के बयान का कहीं दूर दूर तक इंडिया गठबंधन का कोई भी व्यक्ति समर्थन नहीं करता। देखिए, सबसे पहले तो मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूं, पर मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूं। सैम पेट्रोदा जी क्या मैनिफेस्टो कमेटी के मेंबर हैं? क्या वो स्टार प्रचारक हैं कांग्रेस पार्टी के? क्या वो इस देश में रहते हैं? विदेश में 1969 से रह रहे हैं। ठीक है, वो देश में टेलीकॉम रेवोल्यूशन रहा है जब राजीव गांधी जी थे, पर वो भी बीती 50 साल पहले की बात है। उनके मुद्दे को देश का मुद्दा बनाना ये दुर्भाग्यपूर्ण रहेगा। तो मैं कहूंगी कि ये सारे मुद्दे एक तरफ जो जनता के बीच के मुद्दे हैं, और दूसरी तरफ कि सैम पेट्रोदा अमेरिका में बैठकर क्या बयानबाजी दे रहे हैं, ना हमें उससे कोई लेना देना है, ना ये देश का मुद्दा है। देखिए, मेरी ये सलाह है कि सैम पेट्रोदा जी को कांग्रेस अब कह देना चाहिए कि वो उनके लिए बात ना करे और वो बयान ना दे, खास करके चुनाव के वक्त। देश का माहौल इस तरह का है कि लोग चाहते कि वर्तमान सरकार बदले। देश के मुद्दे हैं अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, ये देश के मुद्दे। इन मुद्दों पर अगर हम बात करेंगे कि कहाँ के लोग कहाँ की तरह दिखते हैं, तो इससे नुकसान होगा और ये गलत है, ये रेसिस्ट स्टेटमेंट है। तो कांग्रेस को ये तय करना चाहिए कि क्या सैम पेट्रोदा जी अब बात करेंगे आगे या नहीं करेंगे। Niyamika is joining us live on this broadcast. Niyamika, while Jairam Ramesh seems to have distanced himself and the party stand from what Sam Petroda said, there are some leaders of the Congress party who came out and defended him, like Rajmani Patel. Now, the INDIA bloc leaders and those people considered a little close to the Congress party are also criticizing the party for Sam Petroda's remarks. How is the Congress planning to firefight? Well, indeed, the problem is going to increase for the Congress party as well, because not just the BJP, but even the India Alliance partners are also not in support of the Congress leader Sam Petroda's remark which he has made, and even he has stirred another controversy by making such kind of racist remark as not just the senior BJP leaders, but in fact the Prime Minister Narendra Modi has also slammed the Congress party and even asked the opinion of Rahul Gandhi regarding the statement which is being given by Sam Petroda. As Prime Minister Narendra Modi has also said that this has shown that why the Congress party wanted to defeat Draupadi Murmu in the presidential elections, and that was because of her skin color. So that is a big remark which is coming in on the side of Prime Minister Narendra Modi against the Congress party, and that was the reason why Congress party was being forced to issue a clarification regarding this entire matter. The Congress General Secretary Jairam Ramesh has completely distanced himself and the party from the statement which is being made by Sam Petroda. He has also said that this cannot be accepted on the part of the Congress party for making such kind of remarks which is being done by Sam Petroda. However, now the Congress party has to face the brunt of this statement of Sam Petroda, because many of the India Alliance partners have also come out in open, whether it is Aam Aadmi Party's Sanjay Singh or Uddhav Thackeray-led Shiv Sena's MP Priyanka Chaturvedi. All of these leaders have said that this statement cannot be supported as Sam Petroda's. This is Sam Petroda's personal statement which he has made. However, the manner in which the BJP is raking up this entire matter, it is surely going to increase the trouble for the Congress party, and that is why it is very much important on the Congress party itself that this is a second time. While Priyanka Gandhi gave a remark and responded to a question that was asked to her over Sam Petroda's racist remark, we are yet to hear from Rahul Gandhi. But it's not just people across the political spectrum who are raising this issue. People across Bharat are calling out Rahul's mentor on his divisive comments. Listen in. Most of the people say, like most of the mainland people say that we look like Chinese and then all not Indian, but then that's not true, because we the northeastern people are also Indian, and then it doesn't matter if we look like Chinese or not, but then we're still in Indian. We might not look like the north, like not the north, like mainland people, but then
we're still Indian. Yeah. बेसिकली यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट लोग ही रहते हैं और ज़्यादातर नॉर्थ ईस्ट लोग को नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं, जैसे चिंकी बुलाते हैं, नेपाली बुलाते हैं। हम बेसिकली हम नेपाली होता नहीं है, हम नॉर्थ ईस्ट से होते हैं। He said that we're from North East and we looks like Chinese. So we're also from India. We are Indians, and actually our face look like a Chinese, and we are not a Chinese. We're Indians. So what he says like that was so disrespectful and all. Kane sir, your dinner. On a tile? It's antibacterial. Easy to clean. But plates? Kane bhai, it's a tile lad. IM Plus टेक्नोलॉजी से बने वर्ल्ड क्लास टाइल्स। टाइल हो तो सिंपल हो।